पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ शेयर ट्रांसफरिंग को पास कर, तो ट्रांसफर इलीगल तो नहीं है? They did not file suit for transfer partition of this purchase property. That why हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, क्योंकि हम उसमें पार्टीशन चाहते हैं, इन्होंने वो नीड रिक्वायर जो है वो पूरी नहीं की। और मेरा सूट कहीं से भी बार्ड नहीं है, इस किसी भी साइटेशन में मेरा सूट को कहीं बार्ड नहीं किया। अगर ये सेक्शन 44 में जाते हैं तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं बंटवारा हो जाता, वहीं ये सब पार्टी होती है। आपने फाइल किया था या सेक्शन 44? लॉर्डशिप हमने तो डायरेक्ट पार्टीशन फाइल किया ना, ये जो आपके सामने है। पार्टीशन की जरूरत क्या है जब शेयर डिक्लेयर ही हो चुका है? डिक्लेयर तब होता है जब एग्जीक्यूट होता है, वो एक कॉम्प्रोमाइज डिक्लेरेटरी डिक्री हो गई, डिक्लेयर हुआ, उसमें एक आ गई है ये इतने शेयर के मालिक है, बट लॉर्डशिप स्पेसिफिक कौन से भाग के मालिक है ये डिक्लेयर नहीं। ऑर्डर 20 रूल 16 देखेंगे। सेक्शन 54 या आई एम सेक्शन चैलेंज पर्सन, सेक्शन भूल जाता हूं। यस, सेक्शन 54। पढ़िएगा। Partition of estate or separation of share, where the decrees for the partition of an undivided estate assessed to the payment of revenue to the government, or for the separate possession of a share of such an estate, the partition of the estate or the separation of the share shall be made by the collector or any gazetted subordinate of the collector, deputed by him in this behalf, in accordance with the law, for the time being in force relating to the partition or the separate possession of share of such estate. तो यानी जब शेयर डिक्लेयर हो गए तो उसके बाद कलेक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप इनकी 22-3 की एप्लीकेशन भी देखेंगे, जो नीचे राजीनामा डिग्री फाइल हुई थी, उसमें ये कंडीशन थी लॉर्डशिप कि आफ्टर दिस डिक्लेयर दे बोथ गो टू द रेवेन्यू अथॉरिटीज, दे डिड देयर पार्टीशन, thereafter they can sell their part before they execute that procedure, they directly sell off to the respondents। लॉर्डशिप यहाँ पर ये डिग्री का पालन नहीं हुआ ना लॉर्डशिप, एग्जीक्यूशन जो कंडीशन थी, अगर आप 22 दिन की एप्लीकेशन भी लॉर्डशिप हमारी दी गई, विच इज ऑन Page 53. What is this? 53 का लॉर्डशिप 13 नंबर पर। Now the judgment of the coordinate bench in which para 8 and 11 I am relying. मैं आ क्यों इस आधार पर लॉर्डशिप हमारी डिग्री हुई, तो पैरा 5 में लिखा है कि दोनों ये प्रोसीडिंग करेंगे, या ये करें या हम करें, ये सकते थे लॉर्डशिप डायरेक्टली बेचने का, तो कहीं भी ऐसा कोई 22-3 की एप्लीकेशन में भी नहीं था। फिर उस डिग्री में ये हो जाता है कि 1/3 के हम जो है सहस्वामी है। अब वो कौन कौन सा भाग बेचेंगे, वो तो लॉर्डशिप ये 22-3 के अनुसार भी यही था कि जब हम लोग अपने अपने शेयर के मालिक हो जाएंगे, ये सारी प्रोसीडिंग कर लेंगे, तो लॉर्डशिप वहां से यही एक ग्रीवियस है। और इसमें अगर लॉर्डशिप आप देखेंगे पूरे प्लेंट में जो हमने 2010 में डिसाइड हुआ था, उसमें सारी प्रॉपर्टीज एक ही एक 312/1 312/3 के अलावा 10 प्रॉपर्टीज और थी, उनमें हमने कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। सिर्फ इसी में हुआ क्योंकि ये कोई प्रोसीजर नहीं हमने और डायरेक्ट इन्होंने सेल आउट कर दी, जबकि हमारा भी पार्ट उसमें जो है लॉर्डशिप जो इन्वॉल्व है। अब ये पहले बंटवारा फर्द होता और उसके बाद ये इनका हिस्सा हो जाता है, इनकी अलग इंडिविजुअल डायरी हो जाती। अब इसमें लॉर्डशिप मेरे प्रेफरेंशियल राइट तो जो है वो अफेक्ट होते हैं लॉर्डशिप। एक साइटेशन लॉर्डशिप मेरा भी है कि मेरे प्रेफरेंशियल राइट्स को डिसएसोसिएट नहीं करता। और लॉर्डशिप ने जो फुल बेंच जजमेंट का भी रेफरेंस दिया था लॉर्डशिप, उसमें भी अपील सिर्फ इस कंडीशन पर अलाउड हुई कि
इन्होंने जो जो नए परचेजर हैं इसमें कौन सा पैर आप रिलाई करना चाह रहे हैं? लॉर्डशिप पैरा 20 के ऊपर वाली लॉर्डशिप, ये केस के फैक्चुअल मैट्रिक्स हैं लॉर्डशिप। इसमें भी परचेजर ने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, मैंने डिक्लेरेशन और इंजंक्शन का सूट लगाया, नीचे से डिग्री मेरे फेवर में हुई। डिग्री फेवर में होने के बाद इनकी जो सेल डीड थी वो शून्य हुई। उसके बाद फिर उन्होंने फर्स्ट अपील लगी, सेकेंड अपील लगी, देयर आफ्टर दे रीच एपेक्स कोर्ट, और उसमें माननीय न्यायालय ने माना कि मेरे प्रेफरेंशियल राइट जो है वो डिसएसोसिएट नहीं हो सकते जब तक कि प्रॉपर्टी का प्रॉपर बंटवारा नहीं हो जाता। Lordship, para number 20 ऊपर, therefore the content of preferential right cannot be disassociated in the present case from the principle of succession. They are both the part of the same concept. लॉर्डशिप, अगर वो भी सहस्वामी है तो हम भी सहस्वामी है, अगर हम वो डिग्री को भी मान लें तो, लेकिन हमारा राइट्स जो है वो खत्म नहीं हो जाएगा जब तक कि उसका पार्टीशन प्रॉपर ना होता है। जो नए परचेजर है वो परचेजर अगर उसमें खुद अपना पार्टीशन का शूट लगाते हैं, आप बिहाफ ऑफ देम ये लगा सकते हैं क्योंकि अभी एक सेल डीड ले चुके हैं, तो हमारे राइट्स को लॉर्डशिप में डिसएसोसिएट हो ही नहीं सकते। 22(1) में ऑफ द सक्सेशन है। पूरा आइडेंटिकल लॉर्डशिप रेट्स है। और रेफरेंस कोड ने भी कहीं हमारे नीचे दोनों कोड में ली करने के लिए कोई चैलेंजेस नहीं किए। हम सीधा लॉर्डशिप से 711 में रेस जुडिकाटा का पॉइंट क्लियर करना चाह रहे थे, उसके लिए हमने बता दिया कि रेस जुडिकाटा इसलिए नहीं है क्योंकि नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और नई पार्टीज एडेड हुई, नए राइट्स क्रिएट हुए लॉर्डशिप। इसमें यह भी माना है कि आउटसाइडर कोई भी आएगा तो एकदम से हमारे राइट्स वेव्ड ऑफ नहीं हो जाएंगे। जी, आपका क्या? मैंने स्मॉल सबमिशंस हमने लैंड एक्वायर किया लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत हम दो तरीके से कर सकते थे, एक थ्रू कलेक्टर, एक थ्रू म्यूचुअली। हमने इनसे म्यूचुअली खरीदा। अब जब म्यूचुअली खरीदते वक्त मेरे खसरे में जो एंट्रीज थी हमने उनसे कम्युनिकेट किया। इनके पास डिक्री 2010 से थी, इनने म्यूटेशन कभी जाके करवाया नहीं। अगर ये करवाते तो इनसे भी कम्युनिकेशन होता, इनको भी पेमेंट, हमें हमारा पार्ट क्या है, हम इनको प्लॉट अलॉट कर चुके हैं। हमारा हमने अपना पार्ट पूरा एज अ बोनाफाइड परचेजर जो करना चाहिए था वो पूरा किया। अब इनने अगर म्यूटेशन नहीं कराया तो हमारा उसमें मेलॉट कोई, आप तो मुझे लो दोनों की लड़ाई है। मेलॉट ये इंटरनल डिस्प्यूट है मेलॉट हमारा। ये तो दे चुके हैं, और ये मजे में ये तो दे चुके हैं प्लॉट, वो एंजॉयमेंट रिस्पोंडेंट 1 का था। ये मेलॉट इंटरनल डिस्प्यूट है मेलॉट इनका आपस में। आज अगर इनका कुछ भी अगर ये क्लेम बनता भी है तो व्हाटएवर वी हैव इनको पे कर चुके हैं वो इनसे डायरेक्ट रेज करें, उसमें हम हमारा कोई रोल में अभी तो केवल 711 से ही डिसाइड हुई है कि उस पे है। यस मैम। Section 115 of the Code of Procedure is filed feeling aggrieved by order dated 9/1/2020, passed in regular civil suit number 5200A of 2019 by the first additional civil judge to the first civil judge Latur, whereby the application filed by revision petitioner / defendant was rejected under order 7 rule 11 of CPC was rejected. Learned counsel for the revision petitioner, in addition to the facts and the grounds mentioned in the petition, contends that the plaintiff / respondent Ghanshyam Chaudhary had filed a civil suit of डिक्लेरेशन
Declaration that registered sale deed dated 30th/4/2013 executed by respondent number 1 and 2, defendant number 1 and 2, in bracket the petitioner, bracket close, in favor of defendant number 3 and 4, defendant number 3 and 4, is null and void. The mutation in favor of defendant number 3 and 4 is not binding on the plaintiff. It is further prayed that a partition by metes and bound in furtherance of the judgment and decree dated, the compromise decree dated 11/2/2010, passed in RCS 106A of 2008, be executed, and the respondent number 3 and 4 be restrained from transferring the disputed property. Wait. Respondent number 3 and 4 be restrained from transferring any plot to respondent number 1 and 2. Respondent is dependent है, तीनों जगह dependent है. Defendant number 1 and 2. Para learned counsel further submits that the plaint was assailed on the ground of deficiency in valuation, bar of limitation, non-availability of cause of action, and also on bar of res judicata. Learned trial court rejected the application and concluded that none of the aforesaid ground are made out for rejection of plaint. Learned counsel submits that the present suit is filed for declaration that the sale deed dated 30th/4/2013 executed by defendant number 1 and 2 in favor of defendant number 3 and 4 is null and void. However, the present suit was filed in year 2019. Therefore, the relief of declaration with regard to sale deed is barred by limitation. Learned trial court committed error in holding that the plaintiff were not party to the sale deed. Therefore, the cause of action would start from the knowledge of execution of sale deed. Learned counsel referred to the judgment of Apex Court in case of Suraj Lab such and such to contend that registration of a sale deed is public notice to all. Therefore, the suit was barred by limitation.
Learned counsel further contend that the sale deed was valued at कितना था रुपीज it is 2 crore and 61,80,000. 2 crore 61,80,000, whereas the plaintiff has valued the relief for declaration at rupees 600 and relief for permanent injunction at rupees 400. The valuation put forth by the plaintiff is not commensurate with the value of property that would be affected by the relief of declaration, partition, and permanent injunction. Therefore, the suit was undervalued. Learned trial court committed an error in rejecting this objection without considering aforesaid aspect of the matter, without considering the contention of defendant. Full stop. Learned counsel further submits that as per plaint government in para number कौन सा था वो Para number वो पार्टीशन सूट का partition suit para number 4. para number 4, the plaintiff himself has pleaded that a civil suit for partition was filed against defendant number 1 and 2. The trial court passed a compromise decree dated 11/2/2010 in RCS 106A of 2008, declaring 1/3 share in favor of the plaintiff and defendant number 1 and 2 each. Instead of proceeding with execution of this compromise decree, the plaintiff had again approached the trial court for relief of partition. Such a relief would be hit by the bar of res judicata. Defendant number 1 and 2 had executed. Paragraph. Learned trial court committed error in rejecting the objection of the defendant in this regard. Paragraph. Learned counsel for petitioner further contend that defendant number 1 and 2 had executed sale deed of their undivided share in the family property as per compromise decree. Defendant number 1 and 2 had 1/3 share each in the joint property as declared by the compromise decree dated 11/2/2010. The land sold white registered sale deed, transferred white registered sale deed dated 30/4/2013 is within the purview of 1/3 share of the defendant number 1 and 2. Therefore, there was no cause of action available to the plaintiff
to assail the sale deed, the plate deserves to be dismissed for want of cause of action. Para. Per contra, learned counsel for the respondent submits that no partition by metes and bounds has taken place in furtherance of the compromise decree dated 11/2/2010. Therefore, all the co-owners had undivided ownership rights over the suit property. Defendant number 1 and 2 without partition of the undivided property, executed sale deed, impugned sale deed in favor of defendant number 3 and 4. Therefore, the sale deed is not binding on the plaintiff. Plaintiff had prayed for declaration in this regard. Therefore, cause of action was made out in favor of the plaintiff. The defendant has not asked for the relief of partition, rather the plaintiff has prayed for partition by metes and bounds in furtherance of the compromise decree. Therefore, the bar of res judicata would not be attracted. Learned counsel further referring to the judgment of Supreme Court in case of Baburam versus Santosh Singh. Reported in PIR 2019 SC 1506 submits that the plaintiffs have preferential rights over the suit property. Therefore, the sale deed executed by defendant number 1 defeating their preferential right was null and void. The plaintiffs were not executant of the sale deed. Therefore, ad valorem court fees and the valuation according to the consideration of sale deed was not required. Learned trial court committed no error in rejecting the application. और कोई पॉइंट हो तो बता दो, मैंने सारे पॉइंट आपकी कोशिश Just की. one point. No any specific share has been sold by the defendants. कोई तो अनडिवाइडेड शेयर की तो बात की. No any specific. Undivided share which comes within purview of your Lordship. एक्सप्लेनेशन जो मेरा पेज नंबर 5 में कोट किया ना, जो राजीनामा एप्लीकेशन लगा था कॉम्प्रोमाइज का, उसका पेनल लाइफ जिसमें जो एग्जीक्यूशन करना था उसका वो नहीं किया. तो वही तो अभी तो एग्जीक्यूट हुई नहीं ना वो आज तक. एग्जीक्यूट तो दोनों पार्टी को करना था, एक को करना था. आज भी स्टेटस उसका अनडिवाइडेड है, यही तो लिखना है. Heard both the parties, whereas the record will pass the order in detail. Okay.